So last time we started our discussion on fuzzy logic, and I gave you the basic difference between fuzzy approach and the crisp approach. So we said that, okay, in case of fuzzy, in case of crisp logic, what we have is that you have truth values either at 0% or 100%. And that means that it's primarily a binary logic approach. And in order to represent a binary logic approach, you cannot incorporate linguistic descriptions. Okay, so for example, linguistic description is represented by some words such as uh, the person is not very old. Not very is a linguistic that is attached with a variable age, and age is can be called as a linguistic variable, right? So there are variables that could have linguistic description, and there are variables that may not have linguistic description. Okay, say for example, if I'm talking about the on off uh, status of the light, then the light could be either on or it could be off. It can't be anything in between the two. Okay, so therefore uh, this state of light is not a linguistic variable and cannot have a linguistic description with it. But on the other side, I gave you an example of age, and it could be an example of height, or there are a few other examples, for example, coldness or hotness and stuff like that. So these are all linguistic variables. When I say linguistic variables, that means that you can have a linguistic description of them. And linguistic description would mean that you can have other states other than the 0 1 state or yes no state, or 0% truth and 100% truth, and you can have in between these two. Okay. A person could be um, could have an age of, let's say, say 40, which is not very old. Okay, uh, so you can have a linguistic description of this variable age, and therefore age would be considered as a linguistic variable. So what binary logic is doing, binary logic is primarily cannot incorporate linguistic descriptions. Um, so the example which we studied last time was of height. Um so height is a linguistic variable. The reason is that you can associate some linguistic description to that. Whereas if I convert it, if I use height as a binary variable, then I cannot attach linguistic descriptions. Okay, so binary variables are represented by a step function. Okay, and these step functions are represented as a graph between um, degree of membership, which varies from 0 to 1, and the variable itself. So in this case, the variable is height, and the degree of variation is from 0 to 1. And you can either have a value 0 or you can have a value 1, and there isn't anything in between them. Okay, so therefore anything in between 0 and 1 is what you call as the linguistic descriptor, description, which is not present in this case. If a person is either tall or not tall, and that would mean that you can only have two states, no? 0 state and 1 state 1. The 0 state would mean that the person is not tall, and 1 would mean that the person is tall. Therefore binary can be represented by a step function. Now if you want to convert this into a non-binary representation,
then instead of having a step function, you will have a continuous transition or a smooth transition from 0 to 1 with the help of a function like shown in this slide. So you have a smooth transition from 0 to 1, and this smooth transition is primarily represented by a sigmoid function. Again, your y-axis would be the degree of membership, and your x-axis would be the variable itself. Here, height is considered as a linguistic variable because you can have values in between 0 and 1. Okay, so anything below 0 sorry, anything any height which has a membership of 0 would be considered as small, and any height that is a membership that is any height that is a membership of 1, that would be considered as tall. And these are the two definite uh, uh, age ranges in which a person could be considered tall or short. And in between, you can have any linguistic description of this variable height. Okay, so here this region here is primarily representing the fuzzy logic or non-crisp logic, right? And this is what the real difference will be between the crisp logic and binary logic. So you have a continuous transition from 0 to 1, and that means that you have some degree of association here. So let's say if a person have got this height, which is represented on this slide by this mark here, then this height would have a degree of membership of, let's say, zero point 0.7. Okay, so this would have a degree of membership of 0.7, and that would mean that this person is 0.7 or 70% close to tall, and it is sort of almost 70% tall, and this would include around 30% of features of small height people, right? So that means that this particular instance is more closer to tall. Okay. Whereas if you have height at this particular range, then this would have a membership value of, let's say, zero point 0.2, and the membership value of 0.2 would mean that this person has features of tall people around 20%, and of short people around 80%. Okay, so a value of 0.2 would mean that person is not very close to tall people. So this function here is representing the degree or the membership function of tall people. Okay, so you have a membership function of tall people. So each variable, a linguistic variable, which has a linguistic description, you can have a membership function for each linguistic description. So linguistic description is small people and tall people. Okay, so I can actually define two membership functions, one for tall, which is represented here, and one for small. Okay, so the membership function for small, let's say, uh, would be considered as 1 minus this function. Okay, so you can have a membership function for small. So here I'm drawing the membership function for small people. Okay, people having membership value. So this is the function for small people, membership function for small people, and this is the membership function for tall people. Okay, so you can see the difference. Okay, ideally, जहाँ पे small की membership value 0 है in membership function of tall, उसके against small का जो membership function है वहाँ पे value 1 हो जाएगी. So that means कि if I have the height of a person here, तो यहाँ पे it would have, let's say, if I draw a vertical line in this case, then the membership value of this person in tall is 0, whereas in small is 1, right? So similarly here, अगर कोई individual है जिसकी given height है, so the membership value of in small is 0 and in tall is 1, and in between
लेट्स से कि मेरे पास एक ये मेंबरशिप वैल्यू आती है, ठीक है. So here it's right in the center, almost 0.5. So this would mean that this person has a height with membership value of 0.5 both in small and tall, ठीक है. This example here shows that this individual has a membership value of, let's say, यहाँ पे अगर मैं इसको मेजर करूँ तो let's say कि it's 0.4, और यहाँ पे इसकी membership value जो है वो let's say 0.7 या 0.6 हो सकती है. अच्छा, इन दोनों की जो एडिशन है दैट मे नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू 1, ठीक है. सो द मेंबरशिप वैल्यू इन स्मॉल plus the membership value in tall may not add up to 1, ठीक है, which is not true in case of probability theory. Probability theory में तमाम की probabilities, अगर इन दोनों की probabilities मैं ऐड करता हूँ, और probability of a person belonging to a small group और tall group, इन दोनों की probability अगर मैं ऐड करता हूँ तो the answer should come out to be 1. Whereas in case of membership functions जो कि मैंने यहाँ पे represent किए हैं, the people uh, their membership values or membership values may not add up to a 1. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों के membership values जो है ना वो 1 पे add up करें, right? So I hope this is clear, right? So this is a membership function. So whenever you have a linguistic variable, you can have a membership function associated with that linguistic variable. So यहाँ पे क्या किया है कि if I draw all these membership functions together, तो I'll just redraw the membership functions again. So ये मेरे पास x axis के ऊपर height है और यहाँ पे membership value है, ठीक है. For small people, I can have a function something like this. So this would be the membership function. Sorry if um, I didn't draw it correctly. So let me just draw it here again. So I can have, let's say, okay, for small, I can have a membership function of this form. So this would be the membership function for small, and this could be the membership function for tall. Yes, tall. So this is the membership function for tall, and this is the membership function for small. So this is the case when the height has been divided, or the people have been divided into two groups, right? So you have people of small height and you have people of tall height. Okay. So what if, so this is when I have divided it into two. What if I divide the height of a person into three categories? I can say the people with small height, people with medium height, and people with tall height. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा अगर मैं उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ? तो here I'll have, let's say, one membership function. This would be for small, let's say, ठीक है. And then I could have another membership function. This could be for tall, right? So these are the two membership functions जो कि small और tall को represent कर रहे हैं. But then I could have another category in between, and that category would be something like this. Okay, so now I have got three membership functions here. This one is for small, this one is for medium, and this one is for tall. ठीक. So I have three categories, so therefore I have three membership functions. So यहाँ पे किसी person की height ये है, let's say किसी person की height ये है. तो यहाँ पे if I vertically cut all these membership functions, so you will find कि यहाँ पे it would have a membership value of tall, some membership value of small, and a membership value of medium, right? A membership value of medium. So that means that this person with this person with this much height would have a membership value in all these three categories. ठीक है. और इनकी strength of association with these categories is defined by the membership value. तो इसकी एक membership value होगी. यहाँ पे ये medium, ये tall की, sorry, small की membership value है, ये tall की membership value है, और यहाँ पे कहीं पे जाके ये medium की membership value आ जाएगी.
So as you can see, the addition of all these three membership values may not add up to one. ठीक है? And there is a proof also for that. We will go through that proof also. But this is important कि मैं उसको जितने मर्जी categories में divide करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. So if I want to divide a category, define a category in between S and M, so I can also have another membership function, कुछ इस तरह से membership function मैं define यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई एक आध membership function मैं यहाँ पे define कर सकता हूँ. तो now I have actually divided into 5 different categories. ठीक है. अच्छा, ये तो आगे इस तरह के मेंबरशिप फंक्शंस. आई कुड हैव ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शंस. द मेंबरशिप फंक्शंस कुड बी of different types. So I can have triangular membership functions. For example, this could be the triangular membership function for small. Then I could have a triangular membership function for medium, and then I could have a triangular membership function for tall. So this is the triangular membership of small. This is triangular membership of medium. This is triangular membership function for tall. So if a person is having, let's say, this height, then it has a membership value in medium. You look at the y-axis, and this would be the membership value in medium, and this would be the membership value in small. तो ये वर्टिकल लाइन जिस फंक्शन को जहाँ पे कट करती है उसके अगेंस्ट उसकी मेंबरशिप वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं. So this height does not have a membership value in tall. ठीक है, क्योंकि ये टॉल के मेंबरशिप फंक्शन को ये वर्टिकली कट नहीं करते. Okay. So there could be different shapes of membership functions. Triangular membership functions are the most common membership functions. These membership functions which I've drawn here, these could be Gaussian membership functions or bell-shaped membership functions. Okay, so this is a sigmoid, and this is also sigmoid, or you can have an open bell-shaped membership functions. Okay. So you could have trapezium membership functions. For example, trapezium membership function अगर मैं draw करता हूँ small के लिए, so this membership function would be something like this. Then I can have a membership function for medium like this, and then I could have a membership function for tall. Okay, so these are the membership functions which are represented in the trapezium membership function. You can also have a mix of membership functions. So small जो है वो हो सकता है triangular membership function में define कर दूँ, medium जो है वो मैं bell shaped membership function define कर दूँ, और ये मैं trapezium define कर दूँ. तो I can also have, let's say, membership functions in this form. So let's say कि मैं एक mix representation करता हूँ. So I can have, let's say, small as a triangular membership function. ठीक है. Then medium could be represented by a bell-shaped membership function. ठीक है. Or tall could be represented by a trapezium. ठीक. So this is what is this. So I have divided height into three categories. Just let me repeat this. Three categories: small, medium, high. Small, medium, tall, and then each of them could have their own membership functions. Or यहाँ पे, if I want to find out an association of a height with any of these linguistic descriptions of height, तो मैं horizontal axis के ऊपर height को determine करूँगा कहाँ पे है. Then I'll draw a vertical line और देखूंगा कि किस मेंबरशिप फंक्शन को वो कहाँ पे कट करती है. तो ये दिस मेंबरशिप फंक्शन ये सिर्फ स्मॉल को कट करता है, तो दैट मीन्स कि इट हैज अ मेंबरशिप फंक्शन ऑफ स्मॉल इक्वल टू वट एवर इज ऑन द वाई एक्सिस. लेकिन मीडियम में इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है और टॉल में इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है. वेयर एज यहाँ पे अगर कोई पर्सन हैविंग दिस मच हाइट, अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये टॉल के मेंबरशिप फंक्शन को भी कट कर रहा है और मीडियम के मेंबरशिप फंक्शन को भी कट कर रहा है, लेकिन स्मॉल की मेंबरशिप इसके अंदर जीरो. So I can determine the membership value in medium and the membership value in top. I hope this is clear. If you have any questions so far. G. So shall I move on? Uh, G, जी G. सर. Go ahead. Sir, in a triangular membership function Hmm. for small, shouldn't it be um, uh, from zero to slope down? Because we are seeing the smaller Oh, values yeah. here. G. So
it all depends कि आपने small को define कैसे किया है. So what we are saying here that a person having like height which is very close to zero, this is what we are saying that it's actually not depicting any individual. ठीक है, खास हाइट के बाद जाके उसकी मेंबरशिप वैल्यू स्मॉल की मेंबरशिप वैल्यू इंक्रीज होती है. तो व्हाट वी आर सेइंग इज यू आर राइट, बट ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन के अंदर वी कुड हैव सिचुएशंस जहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द वे यू एक्चुअली डिफाइन द प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब आप जैसे अभी आपने बात की, तो इस सिचुएशन के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, triangular membership functions, or you can say that the trapezium membership functions may not be very suitable. ठीक है, open-ended well-shaped function or sigmoid function may be suitable. ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, लेकिन देयर कुड बी सिचुएशंस जहाँ पे ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शंस कुड आल्सो वर्क. तो आइडियली जो आप कह रहे हैं वो ऐसे ही होना चाहिए कि यू स्टडी द प्रॉब्लम एंड देन यू डिफाइन द शेप. ठीक है, लेकिन what I am representing here is a possibility. You can also have a triangular membership function, but it may or may not make sense. You are the one as designer of the problem to identify कि क्या small membership function या medium membership function या triangular membership functions जो हैं वो सॉरी tall membership functions जो हैं वो क्या triangular रख सकते हैं हम या नहीं रख सकते. ठीक है, your system would work with triangular membership functions also, and your system would also work with open-ended bell-shaped functions. ठीक है, और sigma. सर एक सेकंड क्वेश्चन है कि how can we use a different kind of membership function? Is it a problem dependent or what? Yes, it is problem dependent and how precise you want to represent your problem, right? Okay. तो tall height को जो है वो मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ. ठीक है, या मैं 4 में करना चाहूँगा, या मैं 3 में करना चाहूँगा, या 5 में करना चाहूँगा, या 2 में करना चाहूँगा. ठीक है, इट डिपेंड्स के डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ. ठीक है, से इफ यू वांट टू हैव अ मोर प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट, then you can divide it into more categories. ठीक है, तो let's take the example of temperature in a room. So temperature in a room could be represented by uh, two categories. ठीक है, high and low temperatures. ठीक है, or it could be divided into three categories: low, medium, high. ठीक, or it could be even more than that. The categories could be more than that. So you can have low temperature, then you can have somewhat low temperature membership function, then you can have medium, you can have somewhat high, and then high. So here I've actually categorized into say 5 different categories. ठीक है, so जब मैं उसको 5 categories में divide करूँगा, I'll have a more precise representation. ठीक है, so it depends कि आप कितनी precise representation of your problem चाहते हैं. तो number of membership functions would be dependent upon the problem and the precision you want to achieve. जैसे आप categories बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो है precision जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है जी, thank you Musab. Is there any other question? Okay, so let's move on then. If there isn't any any further question, right? Ji. So fuzzy logic is primarily an approach जिसमें आप fuzzy membership functions. So these membership functions that I've shown you, triangular membership function, Gaussian, or sigmoid membership functions, or trapezium membership functions. This approach is uh, what we call as a fuzzy logic approach. ठीक है जी. So fuzzy logic approach की base जब आप apply करते हैं, so you have linguistic variables, and each linguistic variables have linguistic categories, and each linguistic category would have its own membership.
function, right? And there are different applications here. Um, so let's just so the type of uncertainties that are present within the system, these uncertainties could be stochastic uncertainties, linguistic uncertainties, and informational uncertainties. And what fuzzy logic is actually doing here is कि वो linguistic uncertainties को मॉडल करने के लिए हम इस्तेमाल मोस्टली इसको करते हैं. तो we use it for linguistic linguistic uncertainties, right? So I've given you an example of linguistic uncertainty here. सो क्लास यही बात मैंने पहले की. अच्छा यहाँ पे सॉरी ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग some symbols which are not being displayed in this slide. लेकिन mu here, let me just just forget about these question marks. Mu here is representing, this mu here is representing the uh, membership value. Okay. So what is this? Is a membership function for young people, and mu young x is representing the membership value of linguistic variable young uh, for a given value of age equals x. Okay. So this is what is this is how it is represented. Mu is the membership value, एंड सबस्क्रिप्ट के अंदर आपके पास जो वेरिएबल लिंग्विस्टिक वेरिएबल है उसका नाम आएगा, एंड देन विद इन ब्रैकेट आपके पास वैल्यू आएगी. ठीक है. सो आई कैन से दैट ओके इफ आई हैव दिस वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है जी. तो म्यू यंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज लेट्स से x1, कोई भी वैल्यू आ जाती है x1, तो यहाँ पे म्यू यंग x1 will be equal to 1 in this case. Okay, so it has a membership value of 1, right? So this is how mathematically you can actually write this thing together. So mu is representing membership value, young is the linguistic variable, and x1 is the value of the linguistic variable that you have, okay, which is age in this case. Okay, young is the linguistic category, sorry, of age. So young is the linguistic category of age. ठीक है. तो एज को अगर हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे what is this representing? You can very clearly see here this is the threshold that you have got. ठीक है. This mark is actually the threshold. So I can actually represent this as x prime. So anything less than x prime has a membership value of 1, and anything greater than um, x prime would have a membership value of 0. So this is what the crisp logic is. Okay? You can say mu young x prime की value determine करते हैं. It could be either 0 or 1, and the person could be the person could be young अगर उसकी age इस region में है, and may not be or is not young जब उसकी age इस region में आ जाती है. So mathematically this is what is being represented in this case. So just on the other side, अगर मैं fuzzy को use करूँ तो this is a membership function that we have for fuzzy on the right. So this is the membership function that you have for fuzzy approach. ठीक है. और इसमें भी जो category, and this is for a category young, so linguistic category of age young. So you can actually write it down in this particular case. आप इसकी notation को देख सकते हैं. This is with curly braces and this is with large parentheses, straight parentheses के साथ. So that means that this is representing an interval and this is representing two crisp values, right? So is this clearly right?
Okay. Sorry, I think share screen off. Okay, so I'll just share the screen again. So you can see the screen now. पहले शायद वो नहीं आ रही थी. Okay. So just the repetition of what we have already discussed. अच्छा, this is really an important slide और यहाँ से आपको difference पता चलेगा between the two. मजीद we'll have some insight into it. लॉजिकल ऑपरेटर्स का आपको पता है, आई थिंक आपने अभी तक काफ़ी जगहों पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा होगा. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर, ठीक है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है. दीज आर ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, स्पेशली सेट्स के लिए. ठीक. So let's just try to revise some of the logical say descriptions or the logical operations in case of classical theory. तो क्लासिकल थ्योरी के लिए अगर आपके पास एक फंक्शन a है और दूसरा फंक्शन b है, तो a and b, what would be a and b? A and b would give you uh, G. So can anyone explain this before I actually start explaining this? Okay, what is happening in this case? Let's say A and B का जो graph है, what is that graph representing? So एक आपके पास ये black function है, which is representing B, और फिर आपके पास ये एक ग्रे, लाइट ग्रे के अंदर आपके पास एक फंक्शन है which is A. So these two are representing different types of step functions. तो अगर मैं A and B लेना चाहता हूँ, so what is A and B representing? So this graph here is representing A and B, where and is the logical operator between function A and function B. So can you devise a formula out of here कि अगर टू वैल्यू लॉजिक के अंदर मैं A and B निकालना चाहता हूँ, तो what is the formula here? जी, so shall I ask someone? जी, if Hamza, if you are listening, क्या बता सकते हैं कि what is the operation? जी, so इसने बताया कि this is same as the logic gate and. जी, so what is this logic gate and doing? What is the rule behind this? Okay, so 1 and 1. So if both the values are 1, the answer is 1. If both the values are 0, the answer is 0. Okay? And if one is 0 and the other one is 1, okay, the answer would be 0 again. Right? So in other words, what I can say here is कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो A की वैल्यू भी 0 है और B की वैल्यू भी 0 है, तो बोथ आर 0. So as a result A and B की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. So this is A and B, दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है. और अगर A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 1 है, so the answer again will be 0. This is just like a logical gate. So in other words, मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I have a value 0 in one, comma, I have value in the other, and what is my output? The output in this case will be function min applied. Min is the minimum function. So out of these, the output would be the minimum of the two. ठीक है, तो minimum of 0 and 1. So minimum of 0 and 1 is primarily the output, which comes out to be 0. So primarily A and B is nothing else other than representing a minimum, a min function.
और a function that finds out the minimum value. तो अगर दो फंक्शंस के दरमियान में ए एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर लगाने का मकसद एक्चुअली ये है कि मैं दोनों मेंबरशिप वैल्यूज में से मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू ले रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि बोथ हैज अ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ समथिंग हियर. सो सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आती है तो यहाँ पे इट वुड बी द मिनिमम ऑफ 1 and 1. The minimum of 1 and 1 is 1. So the outcome in this particular case will be 1. ठीक है. So and is nothing else other than the mean operation. So अगर इसी लॉजिक को मैं अप्लाई करता हूँ और के अंदर तो A और B. So what is A or B representing then? G. A or B would be representing max. So A and B are A or B is primarily the max function between the two. Okay. So this is the max function between the two, and then you have the not operator. The not operator is simply as it is shown in the diagram also. This is 1 minus the membership value of A. Okay, so this would be 1 minus the membership value of A, right? So this is A not. Okay, so AND operator is the mean operator, OR operator is the max operator, and then you have the not operator, which is 1 minus mu operator. Right? Is this clear? Okay, so let's move on then. Okay, and this is the multi-valued logic. Now, so you can see here कि ये मेरे पास let's say कि A है. Sorry, I'll just come back to this. So I have this function as A, and then I have got this function which is B. तो इनके ऊपर मैंने min operator लगा लिया basically. तो min operator जब मैं लगाऊंगा तो I'll get this function at the output. ठीक है, this function at the output का मतलब क्या है कि this is primarily the AND operation between these two fuzzy membership functions. तो ये these are fuzzy membership functions now if you remember, और ये triangular membership functions हैं, दो triangular membership functions हैं. तो इनके अंदर अगर मैंने AND operator लगाना है तो this would be simply the min operator. That means कि यहाँ पे अगर मैंने कोई मेरे पास वैल्यू आ गई है of linguistic variable, तो इसके दरमियान बी को ये कट कर रहा है यहाँ पे, so it would have a membership value here, it would have a membership value in A here. तो इन दोनों में से मिनिमम जो है वो एंड में आएगी. तो इन दोनों में से मिनिमम ऑब्वियसली ये है. So this would be the value that I will be getting in a function which is min of A comma B or AND operator. ठीक है, तो ये जो छोटे वाला बोल्ड लाइन के अंदर आपको फंक्शन नजर आ रहा है, दिस फंक्शन इज प्राइमरली a function that is the result of A and B operation, right? A and B operation, and this function here is representing A or B function. So I can have A or B, और A और B में मैक्सिमम आपने निकालना है. तो ये पॉइंट मेरे पास क्यों आया? ये पॉइंट इसलिए आया क्योंकि इधर से मैं अगर वैल्यू निकालता हूँ तो आई हैव वन कट ऑन बी एंड अनदर कट ऑन ए. तो इनमें से मैक्स मैंने निकालना है, और मैक्स वाला ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, सो प्राइमरली व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर सिंपली आउटलाइनिंग. if you look at these two functions, I'll just show you again. If you look at these two functions, the output of A and B is this function, and the output of A or B would be the outer function. So outer outline of the functions will be the resultant, or isme inner outline.
ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम जो होगा वही मेरे पास आउटपुट पे आएगा। तो ये सेम यहाँ पे है और ये वाला फंक्शन, ठीक है। एंड सिमिलरली you can have not a, which is simply 1 minus the membership value of a. So 1 minus the membership value of a. अगर यहाँ पे वैल्यू let's say 0 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 minus 0 will be 1, और अगर यहाँ पे वैल्यू अगर 1 है तो 1 minus 1 will be 0, तो यहाँ पे membership values 1 हो जाए 0 हो जाए. So similarly these values would translate from this function to this function. So these are the logical operators. अच्छा जी, so ये मेरे पास logical operators हैं. So why are these logical operators used? These logical operators can be used in case of rule-based systems or in case of expert systems, and we'll see with the help of examples how these are actually used. But why is it important? Why is this description important जो कि मैंने अभी आपको दी है? So let me give you let's say a problem to solve, और आप उसको अभी सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या होगा. को लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है, एंड आई जस्ट राइट इट हियर. फर्ज करें मेरे पास एक फंक्शन है a, ठीक है जी, और दूसरा फंक्शन है नॉट a, ठीक है. तो आई रिप्रेजेंट नॉट a बाय दिस टिल्डा साइन, ठीक है. टिल्डा a मेरे पास एक और फंक्शन, ठीक है. तो मेरे पास एक फंक्शन a है और एक टिल्डा a है. टिल्डा a इज नॉट a फंक्शन, ठीक है. सो a और नॉट a, यू कैन अज्यूम बोथ टू बी ट्रायंगुलर. यू कैन अज्यूम बोथ टू बी ट्रायंगुलर. a को भी ट्रायंगुलर अज्यूम कर लें और नॉट a को भी ट्रायंगुलर अज्यूम कर लें, एंड देन फाइंड आउट a एंड नॉट a. सो अप्लाई एन एंड ऑपरेटर बिटवीन दीज टू. सो एक एंड ऑपरेटर इनके दरमियान आप अप्लाई करें, ठीक है, एंड फाइंड आउट द रिजल्ट कि क्या आता है. सो लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है which is a. So let's say a is this, और इसका नॉट a क्या होगा? इसका नॉट a, let me represent this with blue. तो इसका नॉट a क्या होगा? 1 minus a. नॉट a 1 minus a होता है ना. So you'll get a function something like this. अब इसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगाएं. सो टू वैल्यूड लॉजिक के अंदर a एंड नॉट a, एंड मैं एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ. सो व्हाट वुड बी द आंसर इन केस ऑफ टू वैल्यूड लॉजिक या बाइनरी लॉजिक के अंदर अगर मैं अप्लाई करता हूँ? तो फर्स्ट बाइनरी लॉजिक के अंदर मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो बाइनरी लॉजिक के अंदर ये स्टेप फंक्शंस होंगे. तो लेट मी से कि a मेरे पास ये आता है, ठीक है, और नॉट a मेरे पास जो है वो ये है. ऑब्वियसली 1 माइनस होगा ना, तो जहाँ जहाँ वो 1 है वहाँ वहाँ ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे ये स्विच करेगा और फिर दूसरा जहाँ पे 0 है वहाँ पे ये 1 हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग. तो अगर इन दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेटर लगाता हूँ तो दिस इज लेट्स से a एंड दिस इज नॉट a. इसको टिल्डा से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है. तो इसके अंदर मैं एंड ऑपरेटर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेन फंक्शन अप्लाई करेंगे. तो मेन फंक्शन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एट 0. व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटिंग? This is representing that there is nothing common between A and not A. आपके पास A and not A का जो ऑपरेशन है that would give you a membership function uh, that is all zeros. Minimum लेना ना, A ये है और not A ये है. This is 1 and this is 0. The minimum is 0, so the answer is 0. और यहाँ पे ये 0 1 हो जाता है और ये 0 हो जाता है, तो दोनों का मिनिमम लेंगे तो आंसर इज अगेन 0. So you will get a line at 0. That is another way of saying
कि there isn't anything common between A and not A, right? Am I clear, ji? Yes. Okay. So what is the outcome of A and not A in multivalued logic? तो मल्टीवैल्यूड लॉजिक में भी मीन ऑपरेटर लगाएंगे. तो जब मल्टीवैल्यूड लॉजिक के अंदर मीन ऑपरेटर लगाएंगे, so what will you get? Okay, so I'll just draw it with the yellow line. You will get a function of this form. I'll just draw it here. So this is what you will get at the output, minimum of the two. And if I draw it separately, let me just draw it with some other. So if I draw it separately, I'll basically be getting this. I hope you can see this. Okay, so these are the two smaller triangles that you are getting here. ठीक है, ये वाला जो area ना आपके पास, this would be the output. And what is this representing? This is representing कि A and not A, अगर आप not operator लगाते हैं A और उसके complement के दरमियान, you will not get a set which is zero. ठीक है, you will not get a set which is zero. You will get some output, right? Is this clear? इसमें कोई question है? जी, anyone? I hope this is clear. So this is where the multi-valued logic departs from the classical logic, which is the binary logic. ठीक है, तो बाइनरी लॉजिक के अंदर A और उसके कॉम्प्लीमेंट में the outcome of A and its complement, and here is the AND operator, is an empty set. Whereas multi-valued logic के अंदर you will get some value, right? So इनका कॉम्प्लीमेंट जो है A और A कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है that will not be zero. ठीक है, तो अच्छा ये तो मेरे पास आ गया. अगर मैंने इसके ऊपर और ऑपरेटर लगा दिया, तो और ऑपरेटर के लिए इट वुड बी जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई गॉट हियर. ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ. तो ये जो आउटर लाइन है ऑफ द टू फंक्शंस, ये वाली, दिस इज ए और नॉट ए, और ये जो नीचे वाली है, दिस इज ए एंड नॉट ए, राइट? So if I draw it separately, this is what I'll be getting. So ये W shape जो है, this would be or operator, और ये M shape जो है, this would be and operator. ठीक है, so this basic difference between the two should be kept in mind. You have to keep this basic difference in mind, जो कि two valued logic और multi valued logic के अंदर आते हैं. I hope this is, you have understood this concept, because this would form the basis of all our discussion, theoretical basis of all our future discussion. ठीक है जी, okay. So let's put things in context. I mean, for a while, just forget about these question marks. जो है ना, ये representing a symbol, belong to symbol को represent कर रहे हैं. ठीक है, so let me just draw this here. So this is primarily representing, okay, let me change the colors. Also let me say right, so this is representing belong to symbol. ठीक है, so x, small x belongs to capital X. अच्छा, यहाँ पे let's put some terminology in place. जो आपके पास variable है, which is represented by x here, this variable is what you call as the universe of discourse.
Okay, so this is the universe of discourse. Okay, the variable itself is called the universe of discourse, and here mu is representing the membership value. So if a person having an age of 23, तो वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इसका एज है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एज है, ठीक है, एंड दैट एज इज रिप्रेजेंटेड इन ईयर्स, और इसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है दैट इज ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1. So this is representing the membership value, and this is representing the universe of discourse. ठीक है, so universe of discourse X है, capital X है, where capital X is representing all possible ages. ठीक है, and small x is representing an instance of capital X. So universe of discourse is age, which is represented by X, capital X, and X, small x 23 is representing an instance, right? Okay. I hope there isn't any problem with this. Okay, so let's just, so this is again different types of membership functions. I'll just show these membership functions here. So this is a trapezoidal membership function. Trapezoidal membership function is represented by a combined two triangular membership functions. तो इसमें B और C की रेंज जो है यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू 1 है B और C के दरमियान, और A से B और C से D मेंबरशिप वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है रेस्पेक्टिव, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज द ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है. दिस क्वेश्चन मार्क इज रिप्रेजेंटिंग बिलोंग टू सिंबल, ठीक है. सो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ये पता नहीं टाइपो में उस सिंबल को वो पिक नहीं कर रहा. अच्छा, एनीवे, तो बिलोंग टू सिंबल है. तो दिस इज द बेस or base of the function, and this base of the function is what you call as the support of the fuzzy set. So now we'll call it a fuzzy set or a fuzzy membership function. I mean, it's one and the same thing. तो A से B तक का जो distance है, that is what is representing the support of this membership function. So base of the function is what you call as the support value, right? So अगर मैं किसी से पूछूं कि एक ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन मेरे पास है और उस ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन की बेस क्या है, सो बेस ऑफ दैट ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन विल बी दिस रेंज, ठीक है. द वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू इज दिस एंड द एंडिंग वैल्यू इज दिस, ठीक है. सो दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है जी. ओके, so this is what you call as the base of the fuzzy set A or the fuzzy membership function. Then you have the core. Core is all those possible values जिसमें membership value 1 है. So membership value 1 trapezoidal केस के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये range है, which is at the top, ठीक है. So this is the core of the function and this is the support of the function, ठीक. Okay, so core is जहाँ पे values 1 है, और base support is जहाँ पे membership values जिस range के अंदर मेंबरशिप वैल्यू जो है ना वो आपकी आई मीन सपोर्ट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है. तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द मेंबरशिप ऑन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स वुड रिप्रेजेंट द सपोर्ट, और कोर जो है जहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी, वो रेंज जो है वो कोर ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन कहलाती है. And then you have the fuzzy cut operation. Now fuzzy cut operation जो है, this is also important. I'll just explain that. Fuzzy cut is primarily a horizontal cut on a membership function against a membership value. So let's say कि मैं कहता हूँ कि इस function को आपने cut करना है at a value of 0.5. So a function cut at a value of 0.5. So 0.5 membership function value यहाँ पे आएगी. So this is 0.5, ठीक है. और इसके ऊपर मैं एक कट लगाता हूँ, ठीक है. सो लेट मी जस्ट शो यू विद ब्लैक. तो यहाँ पे मैं कट लगाता हूँ एंड दिस इज द कट दैट आई हैव अप्लाइड, ठीक है. सो ये जो कट मेरे पास आई है,
this is what I call as alpha cut. Okay, so this is what I call as alpha cut. Okay, so alpha cut कहलाएगा. So alpha cut is alpha cut. Okay, so alpha cut operation is a truncated membership function against any value of a membership value. सो अल्फा कट 0.5 के ऊपर ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. लेट्स से कि मैं 0.8 के ऊपर एक अल्फा कट लगाना चाहता हूँ, 0.8 के ऊपर एक अल्फा कट लगाता हूँ, तो इट वुड बी अ ट्रंकेटेड मेंबरशिप फंक्शन एट दिस लेवल. ठीक है, तो ये इस लेवल के ऊपर ट्रंकेटेड मेंबरशिप फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, सो इफ आई हैव गॉट अ फंक्शन हियर, लेट्स से ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन है, तो टर्मिनोलॉजी इज कि दिस वुड बी द बेस, दिस सिंगल पॉइंट इज द कोर, एंड दिस कुड बी द अल्फा कट. तो अल्फा कट लगाने के बाद मेरे पास जो मेंबरशिप फंक्शन बचेगा, फर्ज करें मैंने अल्फा कट लगा दिया इसके ऊपर, तो द मेंबरशिप फंक्शन दैट विल रिमेन आफ्टर अप्लाइंग द अल्फा कट इज दिस. तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, दैट गेट्स ट्रंकेटेड. सो दिस एरिया गेट्स ट्रंकेटेड. अबव दैट कट जितना एरिया है मेंबरशिप फंक्शन का, दैट गेट्स ट्रंकेटेड एंड यू आर लेफ्ट विद दिस शेप ओनली. ठीक है, so this is what you call as alpha cut. Now alpha cut is also an important concept that you have to keep in mind. ठीक है, so alpha cut operation जो है, that is primarily representing a cut at a particular value of membership function. ठीक है, so I hope this concept of alpha cut is clear. Normalized fuzzy membership function. Normalized fuzzy membership function is a membership function जिसकी maximum value जो है वो 1 है. ठीक है, अगर 1 से कम आ जाती है ये मेंबरशिप वैल्यू, फर्ज करें कि एक मेंबरशिप, एक मेरे पास ये शेप है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, एन अननॉर्मलाइज्ड मेंबरशिप फंक्शन, तो नॉर्मलाइज्ड मेंबरशिप फंक्शन. तो एक मेंबरशिप फंक्शन मेरे पास ये है, और यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और एक मेंबरशिप फंक्शन मेरे पास ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 1 से कम है. सो दिस फंक्शन विल बी an unnormalized membership function or non-normalized or unnormalized membership function कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं. ठीक है, so this is not normalized and this is a normalized membership function. ठीक है, तो normalized membership function में आपकी maximum value जो कि function achieve कर सकता है, that is 1. 1 से ऊपर तो हो नहीं सकती, तो 0 और 1 की रेंज में. सो सब नॉर्मलाइज या सब ऑप्टिमल मेंबरशिप फंक्शंस वो मेंबरशिप फंक्शंस होंगे जहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेस देन 1. राइट, सो उसको हम नॉर्मलाइज्ड मेंबरशिप फंक्शन उसको कहेंगे जिसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो कि पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है 1 है. अगर उससे कम है तो देन इट्स नॉट नॉर्मलाइज्ड. ठीक है, unimodal membership functions or multi-modal membership functions. This is also another function. So unimodal का मतलब ये है कि membership function के अंदर एक ही peak exist करती, एक से ज़्यादा peaks exist नहीं करती, और multi model के अंदर एक से ज़्यादा peaks exist करेंगे. तो let's say कि एक मेरे पास membership function है which is of this form, so this is unimodal. लेकिन एक और membership function है which is of this form. दिस इज नॉट अ यूनिमॉडल मेंबरशिप फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे दो पीक्स एग्जिस्ट करती हैं, एक ये पीक है और एक ये. सो दिस इज नॉट अ यूनिमॉडल मेंबरशिप फंक्शन और अ फजी सेट. आई एम फजी सेट और फजी मेंबरशिप फंक्शन को मैं इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कि ये फजी सेट क्यों है और ये फजी मेंबरशिप फंक्शन ये क्यों है. आई कैन यूज इट आइदर अ फजी सेट और अ फजी मेंबरशिप फंक्शन, दोनों चल सकते हैं. So I've already given you the idea कि multiple membership functions हो सकते हैं. You can have trapezoidal, Gaussian, triangular or singleton. Singleton is primarily a function that is used for what? That is actually used for representing the binary representation. ठीक है,
तो मेंबरशिप वैल्यू किसी एक वैल्यू के लिए 1 होती है और बाकी वैल्यूज के लिए जो है ना, सो इट डजंट हैव दैट ट्रांजिशन देयर। तो किसी एक इंस्टेंस के लिए वैल्यू जो है वो अचीव आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी इंस्टेंसेस के लिए वैल्यू उसकी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सो ए के लिए मेंबरशिप वैल्यू 1 है, बी के लिए मेंबरशिप वैल्यू लेट्स से 0.5 है, इन बिटवीन ए एंड बी द वैल्यू इज, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो पीक है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो प्राइमरीली फजी रूल बेस्ड सिस्टम्स के अंदर या फजी सिस्टम्स के अंदर अगर आपने सिंगलटन को इंट्रोड्यूस करवाया तो दैट मीन्स कि यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए क्रिस्प वैल्यू। तो किसी एक वैल्यू के लिए जो है ये 1 हो जाएगी और अदरवाइज वो 0 हो जाएगी। इसके बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ये है कि फर्ज करें कि मैं इस आई मीन फर्ज करें इसको भूल जाएं फॉर अ वाइल, आपके पास सिर्फ यही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर जाके ये मेंबरशिप वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज वो 0, ठीक है। तो दिस इज टिपिकली रिप्रेजेंटिंग एन ऑन ऑफ सिचुएशन। तो एक्स में बी रिप्रेजेंटिंग switching on of a light button या switching off of a light button। तो जब आप ए पे पहुंचते हैं तो वो लाइट स्विच ऑन हो जाता है, अदरवाइज स्विच ऑफ है। तो दिस इज वन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगलटन, ठीक। तो सिंगलटन है किसी एक इंस्टेंस के ऊपर वैल्यू 1 हो जाएगी या वो पीक करेगी टू एनी अदर वैल्यू, और बाकी वैल्यूज के लिए, बाकी इंस्टेंसेस के लिए वो वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, ठीक है। आई होप सिंगलटन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंगलटन मेंबरशिप फंक्शंस भी आप कुछ वेरिएबल्स के लिए यूज कर सकते हैं कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें किसी एक वैल्यू के लिए वो होता है। जी बिल्कुल जी, whereas the x axis can be real valued, there is no limitation on that, ठीक है। it could be real valued, it could be binary, it could be integers, there is no restriction on that, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे सिंगलटन की एक और एग्जांपल ये है कि आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके उसको लेट्स से एसी को ऑन करना है और फिर आपने उसको ऑफ कर देना, ठीक है। तो किसी एक इंस्टेंस पे जाके वो वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मीन्स कि वहाँ पे वो ऑन हो जाएगा और बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए वो ऑफ है, ठीक है। तो अगर एक ख़ास वैल्यू के लिए आप किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस सिंगलटन ऑपरेशन। और एक्स एक्सिस जो कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग योर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स could be any variable, ठीक है, having real values or integer values, okay। So here is the same uh, description given again, uh, right? Just the repetition of that, this is more यहाँ पे आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा जो कि पिछले वाले में नहीं थे। सपोर्ट जो है दैट इज जस्ट द बेस ऑफ द फंक्शन, कोर ऑफ द फंक्शन एंड अल्फा कट, ठीक है। एंड दीज आर द मेंबरशिप फंक्शन टाइप्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट। और यही वही ऑपरेशन है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनियन ऑपरेशन या और ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन इज आल्सो कॉल्ड द और ऑपरेशन। तो दो फजी फंक्शंस के दरमियान और ऑपरेशन अगर आप लेंगे तो वो कैसे होगा। और ऑपरेशन जो है वो दो तरह के और ऑपरेशन हो सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेशन मैक्स से रिप्रेजेंट होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक है। लेट मी शो इट इन रेड। तो ये मैक्स ऑपरेटर जो है दैट इज आल्सो और इसका और भी फॉर्मूला है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मैक्स ऑपरेशन, सॉरी और ऑपरेशन। तो मल्टीपल फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। मैक्स इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन दैट इज यूज्ड इन फॉर और। इसी तरह एंड के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है विच इज आल्सो कॉल्ड द इंटरेक्शन
दैट इज मीन ऑपरेशन। लेकिन उसके अलावा और भी फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे ये डॉट ऑपरेशन। यहाँ पे आप मेंबरशिप फंक्शंस की रेस्पेक्टिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर। तो लेट्स जस्ट सी कि ये भी और ऑपरेशन है, दिस इज आल्सो और ऑपरेशन, दिस इज आल्सो एन और ऑपरेशन, और इसी तरह से ये भी एंड ऑपरेशन है, एंड दिस इज आल्सो एन एंड ऑपरेशन। यू कैन आल्सो कॉल इट द यूनियन ऑपरेशन एंड द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी कि ये कैसे आपके पास आता है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ द मैक्स ऑपरेशन जब और के लिए आप करेंगे, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ और ऑपरेशन। ठीक है, तो दोनों के अंदर फर्क जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आई जस्ट शो यू दैट कि अगर एक तरह का मैक्स को यूज करते हैं एज एन ऑपरेशन फॉर और, तो दिस इज द रिजल्टेंट। और अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज द मिनिमम ऑफ वन कॉमा द एडिशन ऑफ द टू मेंबरशिप वैल्यूज, तो यहाँ पे अगर दोनों की मेंबरशिप वैल्यूज को ऐड करें और वन से उसको कंपेयर कर लें, मिनिमम जो है वो आपके पास जो है वो आएगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे वैल्यू 0.8 है और यहाँ पे वैल्यू लेट्स से 0.3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो द वैल्यू वुड बी 1.1, और वन से कंपेयर करें तो मिनिमम ले लें, वन से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम वन आएगा, तो आउटपुट वुड बी वन। सो यू विल गेट अ लाइन आउटपुट के ऊपर यहाँ पे वन एज एन आउटपुट आएगा। So this is the resultant that you will actually be getting out of this. और similarly intersection केस के अंदर या and ऑपरेशन केस के अंदर अगर मैं min ऑपरेशन लेता हूँ तो this is what the triangle in red would be the output, और अगर मैं dot ऑपरेशन लेता हूँ so this is what you'll be getting again a triangle but with a smaller height, क्योंकि यहाँ पे आप मेंबरशिप वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में से मिनिमम नहीं ले रहे। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉ करना है, ये मेरे पास आता है, तो ऊपर वाले केस के अंदर मैं इस वैल्यू का और इस वैल्यू का मिनिमम लूँगा और उसको आउटपुट पे डाल दूँगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी माय आउटपुट। So this would be my output in this case. Right, Ji. Now, is this clear? Is there any question on this? Yes. Okay. Ji. Anyone? Awais, Mosab, Hamza, Ujala, Zainab. Any question on this discussion that we had so far? Last one, कौन सा था?